हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। गाइस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। और अभी अभी हमने एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले। इट वाज द अप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट पोएम फ्रॉम क्लास 10 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। और अगेन आया हूँ 1.4 नंबर पोएम ऑल द वर्ड्स अ स्टेज मीन्स ऑल द वर्ड इज अ स्टेज। इस पोएम का अप्रिसिएशन लेके फॉर यू ऑल। So guys, don't forget to subscribe my channel if you have not yet subscribed. So चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं एंड लिसन। जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, आपको ऐसे ही अलग अलग वीडियोस मिलती जाएंगी आगे, तो बहुत कुछ पढ़ना है, इवन ग्रामर, राइटिंग स्किल एंड एवरीथिंग। जस्ट स्टे विथ मी ऑल द टाइम। सो लेट्स बिगिन अप्रिसिएशन गाइज। एज यूजुअल आपको फिर से पॉइंट क्लियर करता हूँ कि हमें कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है अमॉन्ग द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स की पॉइंट्स कौन से होंगे, क्या लिखना है, कितना लिखना है एंड ऑल दैट। सो डोंट फॉरगेट वी हैव टू कवर सम पॉइंट्स एंड द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू कवर इज टाइटल। ये हमने लास्ट लेक्चर भी क्लियर किया था गाइस, सो डोंट फॉरगेट कि हमें टाइटल से स्टार्ट करना है। एंड लुक एट हियर द मार्किंग स्कीम आपको मैंने मेंशन की थी। सो फॉर टाइटल वी हैव अबाउट 1 मीन्स हाफ मार्क्स, वी हैव अ हाफ मार्क्स फॉर टाइटल। आफ्टर दैट वी हैव अ poet, we have to talk about the poet, it is again half marks for this one as well. उसके बाद हमें मेंशन करने राइमिंग स्कीम यूज किए हैं या फ्री वर्स में है, ब्लैंक वर्स में है एंड ऑल दैट, वो मेंशन करना है। इसके लिए मिलेगा आपको 1 मार्क्स। आफ्टर दैट हमें मेंशन करने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम, अगेन इट विल कैरी 1 मार्क्स गाइज। एंड एट लास्ट ऑफ द एप्रिसिएशन होगा सेंट्रल आइडिया, इट इज नोन एज अ थीम एज वेल, जिनको हम बोलेंगे फॉर 2 मार्क्स। इट इज फॉर 2 मार्क्स। सो वी हैव टू कवर ओनली दिस 5 पॉइंट्स गाइज, डोंट फॉरगेट। इसके अलावा ज्यादा कुछ सोचो भी मत, लाइक फेवरेट लाइन एंड ऑल दैट। ओके, सो फॉर 5 मार्क्स जस्ट हमें इतने पॉइंट्स कवर करने। इन बिटवीन 2 साल पहले आई थिंक सो एक पैटर्न था, 2-3 साल पहले 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, तब हमें एप्रिसिएशन था 10 मार्क्स के लिए, तब पॉइंट्स ज्यादा हुआ करते थे, डोंट वरी। बट यहाँ पे हमें जस्ट माइंड में रखने दिस 5 पॉइंट्स याद रखना है। सो लेट्स स्टार्ट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज सॉरी वन सेकेंड। इट इज द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑल द वर्ड अ स्टेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ, और जिसमें हम कवर करने वाले हैं द टाइटल as well as the name of the poet and some information about him as well. Okay, so the poem all the words a stage. Okay, आपको टाइटल को मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपको अंडरलाइन करना है। ऑल्सो यू हैव टू पुट इट इनटू सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, डोंट फॉरगेट इट। सो द पोएम ऑल द वर्ड्स अ स्टेज is written by a great English poet William Shakespeare. The poem has been written by William Shakespeare and he is or he was actually English poet, don't forget it. And आपको name of the poet भी underline करना है, ये भूलना नहीं है। This poem is taken from his play As You Like It. This poem has been taken from his play As You Like It. हमने थोड़ी information दी है about this particular poem and about the poet as well. Even he is known as the national poet of England, आप ये भी mention कर सकते हो, जो आपको introduction में मिल जाता है। सो हमें इतना ही कवर करना है फर्स्ट पैराग्राफ में फॉर 1 मार्क। ओके, हाफ मार्क्स फॉर टाइटल एंड हाफ मार्क्स फॉर नेम ऑफ द पोएट। लेटर हियर हमें कवर करना है whether it has a rhyming scheme or not, or different kinds of figures of speech used in the poem. So the poem is rhythmic. The poem is rhythmic but does not follow any rhyme scheme. It's definitely rhythmic but rhyme scheme नहीं है। तो देखो, आपको पता हो rhyme scheme हो सकती है, ले तो फ्री वर्स में हो सकती है, बट यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं एज इट इज रिटन इन अ ब्लैंक वर्स। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पोएट्री रिटन इन अ ब्लैंक वर्स। तो यहाँ पे एक तो फ्री वर्स हो सकता है, ब्लैंक वर्स ओकेजनली हो सकता है, बिकॉज वेरी फ्यू पोएम्स आर इन अ ब्लैंक वर्स गाइज। ओके, विच डू फॉलो अ रिदमिक स्टाइल बट डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ राइमिंग स्कीम लाइक ए बी बी जो भी होता है, बट वो नहीं है यहाँ पे। इट इज रिटन इन अ ब्लैंक वर्स। तो हमने मेंशन किया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइमिंग स्कीम हियर। The poet has used various figures of speech like or such as alliteration, repetition, inversion and simile. हमें पहले ना name of the different kinds of figures of speech mention करने हैं and हमें कुछ focus करना होना particular figures of speech जो mostly use किया गया है, but he has mainly used metaphor, all the words are stage.
इसी सेंटेंस में हमें मिल जाता है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। इस सेंटेंस में क्या हुआ है देखो, हियर स्टेज एंड प्लेयर्स हैव बीन इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विद द वर्ल्ड एंड एक्टर्स रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे देखो वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर्ड विद द स्टेज, ओके, एंड जो मेन एंड वुमेन है, ओके, लुक एट हियर, दे आर कंपेयर्ड विद द प्लेयर्स एक्चुअली मींस द एक्टर्स। So this is your indirect comparison without the use of like, as नहीं तो simile होता, so it is your metaphor. So हमने mention किया है here stage and players have been indirectly, देखो it is indirect, okay, because simile में होता है direct comparison and indirect comparison होता है in metaphor, okay, compared with, indirectly compared with the world and actors respectively. So हमें इतना ही mention करना होता है and this is enough for 2 marks. Figures of speech for 1 marks and rhyming scheme for 1 marks. Now let's move forward to the last passage where we will cover the theme or a central idea of the poem. Look now, the theme of the poem is the cycle of life. Yes, he has described 7 stages of a life, I think so. Yes, you might have learned from your teacher, आपको पढ़ाया होगा teachers ने. Yes guys, so the theme of the poem is the cycle of life. Shakespeare addresses the world as a stage where everyone has been assigned to play a particular role. So यहाँ पे देखो, we are nothing but, every human being is nothing but actor, and like actors we have to play a particular role as a child, as a youngster, as a adult person, as a old man, etc etc. Okay, so we have to play different roles and it has been described in a poem. वही तो पोएम में डिस्क्राइब किया है. Here entrance stand for birth, entrance stand for birth, whereas exit stand for death. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंपैरिजन किया है क्योंकि जो एंट्रांस होता है, बिकॉज एवरी स्टेज हैज ए एंट्रांस, ओके, एंड एज एनी एक्टर एंट्री लेता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑन द स्टेज एक्चुअली एंट्रांस से. सेम वे in this world we also enter when we got born, when we got a kind of a birth actually, or born you can say, ठीक है. So here entrance stand for birth whereas exit stand for death. Okay, जैसे हमारा प्ले खत्म होता है we have to leave the stage, same way as we are done with all our roles in a life, so we have to also leave this world behind, and I think this is the last stage of life which is death. Don't forget it. The life has very beautifully comparison, okay, the life has been divided into 7 stages. Okay, 7 stages has been described here by poet and each has its own varied qualities and features. Every stage, all the 7 stages has its varied, means different kinds of qualities and features. So every stage, in every stage we have different kinds of qualities and also different kinds of features as well. So you cannot expect to have a same feature, in the same kind of a stage, guys. Don't forget it. The poem tells how one starts life as an infant, completely helpless, without understanding, and ends up the same way without being aware of what is happening with him or her. Look at here. As we start our life without any kind of understanding, because as an infant मतलब newborn child होता है, और I think we are not aware with any kind of understanding and what is going on around us and all that. So we all are without any kind of understanding. Same way, when the life ends, okay, means our old age, at the same time it is known as or called as a second childishness actually, okay. So without being aware, we also leave this world or end this life without being aware of what is happening with him or her. So look at here, what a beautiful comparison. मतलब when we born, so we are not aware with the surrounding as an infant, means newborn child, and when we about to die, old age, about 80 plus 90 plus, then our senses stop working, guys. Okay, like we don't have a teeth, we don't have a thinking power and all that, we don't have much hair as well, kind of same way. So without everything, so we don't have understanding as well of happening, what is going on around us, same way. So it has been described here, guys. So very beautiful theme and central idea. You may add some more points if you wish, if you understand the poem very well. So आप कुछ अच्छे point लिख सकते हो. But guys, listen carefully. Please be with this
चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आगे बहुत से वीडियोस अब मैं अपलोड करने वाला हूँ एंड विच विल मेक योर स्टडी ऑफ इंग्लिश वेरी इजी. सो थैंक यू वेरी मच. See you again in our next video, guys. Till then, let's stop.